विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। We will talk about all the tests that are needed to measure kidney functions, its damage, to detect all the abnormalities. Healthy kidneys remove wastes and excess fluid from the body. And when your kidneys lose all the ability to filter waste from your blood sufficiently, then it may result in kidney failure. Now let's discuss about some important tests that are used to measure kidney functions. First is serum creatinine. Creatinine is basically a waste product in your blood that comes from muscle activity. It is normally removed from your blood by your kidneys, but when kidney function slows down, the creatinine level rises. Then, glomerular filtration rate. GFR is a measure of how well the kidneys are removing wastes and excess fluid from the blood. It is calculated from the serum creatinine level. Normal GFR is 90 or above. A GFR below 60 is a sign that the kidneys are not working properly. And if GFR decreases below 15, one is at high risk for needing treatment for kidney failure. Then blood urea nitrogen. Urea nitrogen comes from the breakdown of protein in the food you eat. If we talk about normal blood urea nitrogen level, it is between 7 and 20, and as kidney function decreases, this level rises. Then is ultrasound. This test uses sound waves to get a picture of the kidney. It may be used to look for abnormalities in size or position of the kidneys, or maybe the obstructions like stones or tumors. Then CT scan. CT scan, that is computer tomography, it allows doctors to see inside your body. It uses a combination of X-rays and a computer to create pictures of your organs, bones and other tissues. Then, very important, urine tests. Some urine tests require only a couple tablespoons of urine, but other tests require a collection of all urine which is produced within 24 hours. A 24-hour urine test shows how much urine your kidneys produce and how much protein leaks from the kidney into the urine in one day. Then urinalysis. This includes microscopic examination of a urine sample as well as a dipstick test. Dipstick is a chemically treated strip which is dipped into a urine sample, and the strip changes color in the presence of abnormalities such as excess amounts of protein, blood, pus or sugar. Then urine protein. This may be done as part of a urinalysis or by a separate dipstick test. Then another is microalbuminuria. This is a more sensitive dipstick test which can detect a very tiny amount of protein which is called albumin in the urine. Then creatinine clearance. Creatinine clearance is a test that compares the creatinine in a 24-hour sample of urine to the creatinine level in your blood to show how much waste products the kidneys are filtering out each minute. So tracking your test results over time can show you how your kidneys are doing. And kidney disease is a very silent disease, so it is important to take good care of your kidney and keep it healthy. And Ayurveda is the most effective and natural way to treat all kidney related problems. And in Ayurveda, Karma Ayurveda has created a well-brand name for itself. It has treated thousands of patients from all over the world under the guidance of Dr. Puneet Dhawan. Ayurveda is not dependent on dialysis and transplant. While in allopathy, if you reached at the severe stage of kidney disease, the only treatment left is dialysis or transplant, which are very costly and time-consuming. But Ayurveda uses natural treatment which has no side effects, and people who don't want to go with the dialysis or transplant procedure find a hope in Ayurveda. Let's see some reports and successful treatment by Karma Ayurveda. और पहले क्रेटिनिन का इंक्रीज करता चला गया, जैसे रिपोर्ट्स देखी हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पहले स्टार्टिंग में सर 3 पॉइंट था, फिर 4 पॉइंट हुआ, फिर 5 पॉइंट, फिर 7.7।
अच्छा उसके बाद सर यहाँ आए थे सर जब डायलिसिस के लिए प्रेफर किया था हमको भी डायलिसिस करवा लीजिए, हाँ, फिस्टुला बनवा लीजिए। हाँ, अभी भी दोबारा गए थे तो चेकअप कराने के लिए, तो तब बोल रहे थे, लेकिन फिर अभी आना ही डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है आपको, काफी इम्प्रूवमेंट। टेस्ट आपने कहाँ से कराए हैं? सही हल्द्वानी। हल्द्वानी से टेस्ट कराए हैं। जब आए थे इनका 7.7 क्रेटिनाइन पहुंच गया था और बहुत तेजी से बढ़ रहा था ये। बढ़ते जा रहा था। बढ़ता ही जा रहा था, हर महीने बढ़ रहा था। हाँ, वो डॉक्टर भी कह रहे थे रेगुलरली इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा बोला था डॉक्टर ने? उन्होंने ये कहा कि एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या बोला उन्होंने? एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस डायलिसिस ही एक वो है और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट या तो फिर ये बढ़ेगा, उन्होंने आपको बता दिया था। ग्रेजुअली डिक्रीज इंक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। अब आपने दिखाई नहीं रिपोर्ट्स की डिक्रीज हो गई। 31 अगस्त को कराया, 7.1 हो गया इनका। 7.7। हाँ, फिर 1 हो गया और उसके बाद फिर अब इन्होंने कराया 6 की रेंज में आ गए, 6.7 आ गए। फिजिकली सारे सिम्टम्स जो थे वो डिसअपियर हो चुके हैं इनके पहले से और अब में, और काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं। स्वेलिंग वगैरह नहीं है इनको कोई भी, और डाइट और जो पहले ये ले रहे थे बहुत हैवी डोज में 200 mg की, वो भी अब नहीं ले रहे हैं। अच्छे से उन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी जैसे जैसे बताया था इनको। और आज ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर हैं, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आवश्यकता इनको नहीं है। So proofs are in front of you. Your kidney disease needs proper and intensive treatment using a combination of powerful herbal medicines. Ayurveda has the power to revive back your kidneys' functions. So if you or your known is dealing with kidney diseases, kindly consult our doctor Puneet Dhawan. You can call or WhatsApp on the given numbers, or you can visit our office. Our address is G20 NDM1 Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi. If you like this video, please hit the like button and subscribe our channel, or you can comment below to share your suggestions. Believe in Ayurveda, stop kidney dialysis.